as a generation, do you think we are not very good at confrontation? Baba, I'll just complete the question and come to you. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे रेडिट पे ट्विटर पे लगे रहते हैं हम लोग, कितना इजी है, किसी का आइडियोलॉजी मैच नहीं करती सीधा ब्लॉक कर देते हैं हम लोग. वी आर जस्ट कंज्यूमिंग व्हाट वी वांट टू कंज्यूम. कुछ भी आपके आइडियाज को कॉन्फ्लिक्ट करता है, एज अ होल जनरेशन ऑफ पीपल, वी आर मे बी जस्ट easy to block it out. The whole cancel culture around it, right? If we talk about society or the politics, just canceling out people has become so easy for us. जो भी हमें challenge करता है, we feel that let's just cancel this instead of discussing things. So don't you think we are a generation of those people who hate conflict, whether it is good or bad, we'll come to that. But हम लोग avoid करते हैं conflict. In a way, yes. Okay, let me combining two questions together. Right? The original question of what has shaped this ideology. Right? So I think, see, एक तो है कि most of the millennials, okay, have come from middle class backgrounds, right? Our friends and all the people that we have been exposed to, right? So एक तो है कि they have seen their parents or relatives maybe not all struggling for money as such, but having a limited amount of money, right? Having most of them were in government job, their parents, mostly one of the parents was working, the mother was mostly a housewife and all that stuff, right? So I think ek to hai ki all of them have come from a background while growing up in their formative years. There has not been a problem of plenty. Everything has been limited. I think, and even the parents who have financially very well to do, I think they also raise their kids in a very frugal manner, what I have seen, right? So बहुत कुछ दे नहीं देते थे. हमारे साथ भी जो मतलब बहुत ही रईस वाला फ्रेंड था, उसका भी मतलब ऐसा नहीं, हमारे जैसा ही बैग था. एक वो था कि I remember a very rich friend, he had एक बॉक्स होता था, पेंसिल बॉक्स, जिसमें प्रेस करने से इस तरफ से रबर निकलता था, एक तरफ से वो निकलता था. हमारा नॉर्मल खोलने वाला पेंसिल बॉक्स था, उसके पास वो था. बट अदरवाइज ऐसा नहीं था कि मतलब उसको बहुत पॉकेट मनी दिया जा रहा है. तो आई थिंक कमिंग बैक टू द थिंग, मैं उस पे लाना चाहूंगा एक. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो आप बोल रहे हो, बेसिकली ये बोल रहे हो कि मिलेनियल्स वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल ऑफ द एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास. सो दिस वाज द टाइम व्हेन मिडिल क्लास was expanding as a segment of society. अपर मिडिल क्लास बनना शुरू हुआ था, मिडिल क्लास भी बन रहा था. इससे पहले you can say there was like more of upper class and lower class. Middle class was limited, but this was the time when middle class was expanding. Sorry to interrupt. I just thought, are we limiting our discussion to Indian diaspora? Not really. Then the story changes, right? I mean, if you go... Correct. No, but our discussion mostly will be Indian because we are talking from personal experiences, right? कहीं पे हम लोग जो popular culture में देखते हैं वो भी लाएंगे. But our experiences जो share करेंगे तो Indian context में ही share करेंगे. मतलब मुझे ये लगता है कि we were the first generation of the middle class that was expanding. So we were like collectively kids who were coming from the families where the fight was not about survival. We had gone past that, most of the people in the generation, but we did not have plenty, right? So we were those people and first generation of those people growing up, right? Because I think Gen Zs would probably have parents who would have maybe more than what boomer parents or Gen X parents had, right? Like, so I think that can be that can be very logical, which could have shaped a lot of things. One is financial part, right? I think the other thing is the power dynamics, right? So most of I'm talking from my own example. Most of our parents possibly were like in a government working setup, who were not in business, right? And तब वो CEO, CXO level वाला कहानी नहीं था. Okay, it was mostly somebody starting his job in a very at the entry level, growing up, retiring as a additional supervisor, senior clerk, all of those stuff, right? So I think वो भी नहीं था. मतलब जो when growing up ना, एक तो था कि पैसा limited था, resources limited थे. From a power prestige perspective also, I think we have all seen our parents not being mild with the society, if I can call that. Be it their offices. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को सुन रहे हो कि ऑफिस में ठीक नहीं चल रहा है तो नौकरी छोड़ देंगे.
तो जो तुम allude कर रहे थे, right? Our kids might be, हाँ पापा ने तो नौकरी छोड़ दिया, मतलब all those things were never even thought about, right? Again, coming back to the divorce कहानी also, right? Our parents divorce rate सुनते ही नहीं थे, right? In our parents community, right? सिर्फ नहीं, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ डिवोर्स का, तो बट ठीक है, we हाँ can talk हाँ about इंडियन it. कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो ना, मतलब अभी और एक तो हर थिंग आई थिंक फाइनेंशियल, द पावर डायनामिक्स एंड द होल सोसाइटल, हाउ सोसाइटी वाज, राइट? मतलब तुम एक न्यूक्लियर फैमिलीज कम थे, जॉइंट फैमिली सब नहीं थे, बट तुमको एक भाईचारे वाला माहौल ही था. अभी क्या है कि मतलब इट यू कैन मैक्सिमम 2-3 लोगों के साथ तुम रहते हो, राइट? तो वो एक है कि मतलब मेरे पास ही बहुत पैसा है, जरूरत भी नहीं था. नहीं, तो इससे अगर हम कॉन्फ्लिक्ट पे वापस आपको मैं लाने की कोशिश करूं, बिकॉज यू आर लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, यू आर सेइंग योर चांसेस ऑफ हैविंग मोर conflicts is higher. Is that what you are No, I am saying that because you are the three things combined, right? Financial thing, the power dynamics, and how society was, family or outside family. So all these things are all pointing to कि you have to become less conflicting. मतलब conflict oriented कम बनोगे तो maybe if you can call it a conflict index बना लो तुम कहीं पे, तो conflict index में कम ही नंबर आएगा millennials का during the formative years because of these three aspects. There might be other aspects. तो फिर वो इसीलिए कम हाँ मतलब while we were growing up, I think हमको we as in you also. हाँ तो सिखाया तो वही गया है, मैंने वो रास्ता चूज नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, कोक स्टूडियो में एक बढ़िया गाना है कि जो राह है हर कोई ले, तुम वो रास्ते पे क्यों चलो. तो मे बी आई हैव टेकन अ डिफरेंट रोड. आई एम नॉट सेइंग आई एम प्राउड ऑफ टेकिंग अ डिफरेंट रोड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मोस्ट ऑफ अस, राइट, वर आल्सो टोल्ड बाय सोसाइटी, पेरेंट्स कि लिव लाइफ इन अ माइल्ड मैनर. ओके, बी इट इन ऑफिस, स्कूल वूल जो भी है, राइट? कहीं पे भी होता था कि तुम मारपीट करके तुमको ही डांटते थे, ऐसा ही माहौल था, राइट? आजकल तो माहौल अलग सुनता हूं मैं, मतलब टीचर को भी डांट देते पेरेंट्स लोग जाके, तो वो था कि तुम्हारे ही कोई गलती होगा, राइट? सो वी हैव ऑलवेज बीन asked to not get into conflicts, these three reasons, as well as the society. So I think that has shaped how our psyche has been, the millennial psyche. To avoid conflict, वो psyche तो condition किया गया है, is what I. Great point. I think I also agree. मेरे को मतलब मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कि when and why this would have happened. I understand your three core reasons or core pillars that are shaping this, but how they are shaping this मैं शायद अभी भी नहीं समझ पा रहा. हाँ, तीन चीजें ऐसे शेप कर रही है कि conflict. रिसोर्स नहीं है अगर मेरे पास, हाँ, तो हाउ मतलब, लेकिन मेरे से पहले वाली जनरेशन से तो ज्यादा रिसोर्स है मेरे पास. नहीं रिसोर्स है क्या, वो नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ कि when you are growing up, let's say तुम अभी एक स्टार्टअप ज्वाइन करो, राइट? आई एम गिविंग अ बिजनेस एग्जांपल. अभी स्टार्टअप ज्वाइन करो तो स्टार्टअप, अनलेस इट इज अ हेवीली फंडेड स्टार्टअप, इट विल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? तो तुमको सेल्स भी तुमको करना है, मार्केटिंग भी करना है, तो तुमको भाईचारे से काम करना पड़ेगा. यू विल हैव 2-3 पीपल हु हैव जॉइंड यू एज को-फाउंडर्स और सम पीपल, तो उसमें तुमको एक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके ही काम करना पड़ेगा. हाँ, इट कुड बी कॉन्फ्लिक्ट, कुड बी ऑन आइडियोलॉजीज इन द सेंस कि मतलब ये डायरेक्शन पे लेके जाना है कि लेके जाना है, वो अलग कहानी. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिमिटेड रिसोर्सेज जब है, यू वांट टू मतलब झगड़ा, मारपीट, नॉट मारपीट इन फिजिकल सेंस, वो करके तुम आगे नहीं बढ़ते. मेरे को लगता है पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है. लिमिटेड रिसोर्स है, 3 लोग लेट्स से काम कर रहे हैं एंड काम को डिलीवर करने के लिए तीनों की जरूरत है. अगर तीनों का पर्पस अलाइंड है, तीनों उस चीज पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि काम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडियन क्रिकेट टीम का अगर हो दूं आपको, ठीक है, टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. पीपल कैन से कि जी अच्छा कोच है कि नहीं है, कि बेकार कोच है, बट द कॉन्फ्लिक्ट वुड नेवर बी ऑन द पर्पस ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, राइट? Everybody is trying to make India win. Whoever is in the support staff or in the team or in the setup or in the management, as compared to maybe PCB, where the purpose only is not met. So I'm saying if everybody is working towards getting job done, all 3 people or the entire cricket team and whatever, तो फिर conflict जो होंगे they are okay to have, I think. But अगर आपका conflict purpose पे ही है कि नहीं, कि मैं तो final outcome पे एक alignment होना चाहिए, then conflicts are okay, I feel. हाँ, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट पे तो हम गए ही नहीं. कॉन्फ्लिक्ट कुड हैव पॉजिटिव आउटकम्स आल्सो, बट वी वर मोस्टली डिस्कसिंग ऑन की आई थिंक दिस लिमिटिंग फैक्टर्स, राइट? फाइनेंशियल लिमिटेशंस, सोसाइटल लिमिटेशंस जो डिस्कस किया मैंने, राइट? वो सब मिला के
somehow has ingrained in the millennials कि देखो best way of life, जैसे हमको सिखाया गया कि truth is the best policy, right? Yeah. और truth is Honesty is the best honesty is the answer. Honesty is the best policy. वो तो हमको बचपन से सिखाया गया है, तो कंडीशन किया गया है. So in a way, I would say these three factors, along with the relatives, teachers, everybody has sort of conditioned us to believe, our generation, कि conflict avoidance is the best policy. आजकल के पहले जैसे डिवोर्स पे तुम बोल रहे हो ना, आई थिंक जो मूवीज में दिखाते हैं, अगेन इट माइट बी अ कंट्रोवर्शियल थिंग, कि पहले जो होता था कि तुम देखोगे मूवीज में, घर में भी अगर लड़की वापस आ गई तो पेरेंट्स बोलते थे कि वापस चले जाओ, या तो मतलब हम सहारा नहीं दे सकते हैं, या तो तुम्हारी कोई गलती होगी. दिस इज व्हाट वी सॉ इन द मूवीज, राइट? आज की तारीख में क्या दिखता है तुमको? हम तुम्हारे साथ ही है, लड़के ने कुछ किया होगा. सो द होल सिनेरियो हैज चेंज. सो आई थिंक There was Baba's female following. नहीं, फीमेल फॉलोइंग जाए तो जाए, वो कहानी नहीं. व्हाट आई एम सेइंग इज बाबा ये नहीं बोल रहे वन ओवर द अदर, नहीं बोल रहे. बाबा कह रहे हैं थिंग्स हैव चेंज्ड. things have changed. So I think we were taught, conditioned to avoid conflicts from our growing years, which has changed now. So I think that societal conditioning, along with those limiting factors, कि तुमको पता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है कि तुम इतना पैसा है कि तुम्हारा बाप पैसा फेंक देगा, right? All those things taken together has possibly made our generation growing up in those years as conflict avoiding